Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. So, children, I just hope आप प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं, रिवीजन अपनी कर रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए. बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, as exams are very near to you. Firstly, I should write down the details, date. Class 12C, subject psychology. Date, class, subject. Everything is mentioned properly. Okay. So basically, we are discussing in this video the objective type question. So same I am going to discuss with you today. The chapter which we are discussing yesterday is therapeutic approaches. So उसे ही discuss करेंगे हम लोग. Therapeutic approaches. ठीक है, therapeutic approaches को ही discuss करेंगे. चलिए. आई थिंक 9 क्वेश्चन मैंने आप सभी से डिस्कस किया था. ठीक है, 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. नाउ उसी रेफरेंस में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, थेरापेटिक अप्रोचेस से ही. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. An approach to therapy I hope the questions are properly shown. An approach to therapy that attempts to integrate a an approach to therapy that attempts to integrate a client's thoughts, feeling and behavior. Client's thoughts, feelings and behavior client's thoughts, feelings and behavior into a unified whole. An approach to therapy that attempts to integrate a client thoughts, feeling and behavior into a unified whole. Name the approach. आपको उस अप्रोच का नाम बताना है. कौन सी थेरेपी है? एन अप्रोच टू थेरेपी कौन सी थेरेपी है जो अटेम्प्ट करती है इंटीग्रेट करने में क्लाइंट के थॉट को, फीलिंग को, बिहेवियर को इनटू अ यूनिफाइड होल. ठीक है, सो इट्स थेरेपी मीन्स बेसिकली अगर हम इफ आई जिस्ट इट, सो बेसिकली इट वाज आस्किंग दैट विच थेरेपी टॉक्स अबाउट एज अ होल. होल की बात कौन करता है? सो ऑब्वियसली एज अ होल की बात कौन करता है? इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गेस्टाल्ट थेरेपी. आंसर है गेस्टाल्ट थेरेपी. राइट डाउन द आंसर.
and write down the question as well, everyone, please. Okay, I hope you all have written it down. Now move to the next question. Question number 11. Write down the question number 11. Okay, question number 11. What is the name of the therapy? What is the name of the therapy? What is the name of the therapy suggested by? What is the name of the therapy suggested by Fred? What is the name of the therapy suggested by Fred and based on the premise that based on the premise that the primary sources of abnormal behavior are unresolved past conflicts. So here you will mark out the question mark. Firstly, note down the question. उस थेरेपी का नाम क्या है जिसे फ्रेड ने सजेस्ट किया है, और वो इस थ्योसिस पे बेस्ड है कि प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर आर अनरिसॉल्व्ड पास्ट कॉन्फ्लिक्ट. कुछ अनरिसॉल्व पास्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. पास्ट यानी वॉट एवर द थिंग विच गॉन, उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो अनरिसॉल्व रहते हैं, रिसॉल्व नहीं होते हैं, उनकी वजह से हम एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज psychodynamic therapy. Answer is psychodynamic therapy. Isn't it clear? Shall we move to the next question? If you all have written it, write down the question number 12. Question number 12. The use of any psychological technique, the use of any psychological technique in the treatment of
mental in the treatment of mental or psychological disorder, in the treatment of mental or psychological disorder or maladjustment, in the treatment of any psychological और मेंटल डिसऑर्डर और मैल एडजस्टमेंट, ये किस में होता है, इसे हम क्या कहते हैं? द यूज़ ऑफ एनी, अगर किसी साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज़ हो रहा है, अगर किसी मेंटल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, तो इसे हम कहेंगे इट इज़ नोन एज साइकोथेरेपी. क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव डिस्कस and we have discussing the chapter therapeutic approaches. So let's move to the next question, question number 13. The last thing which we have discussed is the use of any psychological technique in the treatment of mental psychological disorder or maladjustment. So answer of this question is psychotherapy. Please note it down. The answer of this question is psychotherapy. Okay. Now moving to the next question, question number 13. Okay. Okay. I hope the details are visible to you all the details. So moving to the question, write down the question number 13. A therapeutic system, question number 13. Okay, a therapeutic system developed by Albert Ellis. A therapeutic system developed by Albert Ellis is dash. कौन सी ऐसी थेरेपी थी, विच थेरेपी विच वॉज डेवलप बाय दी एल्बर्ट एलिस? एल्बर्ट एलिस ने उसे डेवलप किया था. ओके, व्हाट इज द आंसर चिल्ड्रन? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज RET. RET is the name of a therapy which is given by Albert Ellis. The full form of RET is Rational Emotive Therapy. Rational Emotive Therapy. Okay. Next, write down the next question. Question number 14. Everybody write down the question number 14. Restoring an individual to, write down, restoring an individual to, restoring an individual to
normal, restoring an individual to normal, comma, or as satisfactory, or as satisfactory, or as satisfactory a state as possible, a state as possible, a state as possible following an illness, following an illness, criminal episode, etc. Following an illness, criminal episode, etc. What is this phenomena? What is this term? ये term क्या है? ये phenomena क्या है? Firstly, you should write down the question. Then we are able to. Then we are going to describe it. What it is saying that restoring an individual to normal or as satisfactory a state as possible following an illness, criminal episode. If we are restoring an individual, किसी individual को हम restore कर रहे हैं, normal कर रहे हैं, उसकी conditions को satisfactory कर रहे हैं, so what we call this phenomena? So this is known as, the phenomena is rehabilitation. It is known as rehabilitation. Rehabilitation. ठीक है, rehabilitation. Is it done? Have you written it? So the two questions we have discussed children. Now moving to the next question. Question number 15. I hope both of you have both of the questions you all have written it down. So now write down the question number 14. So sorry, 15. The question number 15. Write down the question number 15. A procedure in which a procedure in which clients are taught to release all the tension in their bodies, is called dash. Please write down the question children. Now we are going to explain it. ये कह रहा है एक प्रोसीजर है जिसमें क्लाइंट को ये बताया जाता है कि या सिखाया जाता है कि वो अपने सारे टेंशन्स को रिलीज़ कर दे अपने बॉडी से जितनी भी टेंशन है उसको रिलीज़ कर दे. So that is a procedure which is known as, the answer of this question is relaxation training. Relaxation training. Okay, so answer also you all got it. Now write down the next question. Question number 16. I think children we are preparing you for more and more questions. ज़्यादा से ज़्यादा questions आप prepare कर रहे हैं. Write down the question number 16.
In psychoanalysis, attempts by the patient to block treatment is called dash. Psychoanalysis is a technique which is given by the Sigmund Freud, और इन्होंने क्या कहा है इस टेक्निक में कि in psychoanalysis attempts by the patient to block treatment, अगर पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट को ब्लॉक करना चाहता है, मीन्स ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता, ऐसा कुछ अटेम्प्ट वो करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A form of behavior therapy in which a phobic client learns to induce a relaxed state, and then exposed to relaxed state, and then exposed to stimuli, and then exposed to stimuli that elicit fear or phobia, Everybody write down the question. बिहेवियर थेरेपी का वो कौन सा फॉर्म है जिसमें कि फोबिक क्लाइंट को लर्न किया जाता है कि वो रिलैक्स स्टेट में रहें और उस स्टिमुलाई से एक्सपोज कर सकें जिससे उन्हें फियर या फोबिया होता है। तो ये कौन सी थेरेपी है? सो ऑब्वियसली इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोबिया के लिए ही थेरेपी, वन थेरेपी देयर व्हिच ऑलवेज वर्क इज सिस्टमैटिक desensitization. Only
one therapy is there which work. It is the systematic desensitization. I hope it is clear to you all. Okay, thank you so much, children.